Hello guys and welcome to Unfiltered Ideas Clips channel where you can find short informative clips from a 1 hour long podcast. So now let's talk about depression and anxiety, क्योंकि ये terms ऐसे है कि कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं और कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं आजकल, एंड ये बहुत ही लूजली यूज़ होने लगे हैं. So how do you define depression and anxiety? I don't like to define it, to be very honest, if I'm being very honest. Depression, according to me, is you being stuck in your past. And anxiety is you worried about your future. It's always that. Future could be 10 years, 10 minutes, 10 seconds. It's always something that is about to happen. That perhaps paranoia, if you want to call it. And depression is just being stuck in the past, not being able to move on from something that had happened. And what is the timeline for that? क्योंकि छोटे मोटे प्रॉब्लम तो सबके साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, सो इट्स नॉर्मल टू बी वरीड अबाउट इट या बी सैड अबाउट इट फॉर let's say 10-15 days, a month, 2 months, depends upon person to person. So when can you say that कि death की वजह से depression में चला गया? See, since you mentioned death, right? Yeah. So quite often people confuse not being able to grieve for somebody you've lost to depression. There's grieving and there's depression. Yes, there's a faded line when it happens, but being able to grieve properly for that person, giving yourself that time and then coming out of it, like I said, it's not like 21 days wala thing. Some can take 15, some can take 21. As long as you're working on it, you're doing fine. But major मतलब ऐसे पेशेंट्स जो आते हैं आपके पास जिनको डिप्रेशन होता है, उनका टाइमलाइन क्या होता है कि वो ये प्रॉब्लम को कितने दिन तक गो थ्रू कर रहा है? उसको आप मेजर प्रॉब्लम बोल सकते हो, पूछ रहा हूँ मैं. To be honest, ऐसा कोई defined timeline नहीं है. Yeah. So we can't define depression. We can define depression, but we cannot give it a timeline. Some people get very comfortable in their misery. Yeah. Like I'll give you an example. एक book है, The Body Keeps Score. उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ था about मार्टिन सेलिगमैन, पॉजिटिव साइकोथेरेपिस्ट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स पे. उन्होंने कुछ सेट ऑफ डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे एंड उनको एक केज में बंद करके रखा था, और एक और ग्रुप ऑफ डॉग्स था जिनको उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ केज में बंद किया था. व्हेन ही ओपन द केज ऑफ बोथ द केजेस, द डोर्स ऑफ बोथ द केजेस, जिनको शॉक नहीं दिया वो भाग गए. बट जैसे उन्होंने ये वाला ओपन किया, उन्होंने वापस उन डॉग्स को शॉक दिया and they stayed in that cage. They did not get out of it. Almost as if it's learned helplessness. इतने टाइम से शॉक पे शॉक मिल रहा है, they're like, I don't even know how to get myself out of it. And that is exactly what happens to humans, be it depression or mobile social media addiction. Okay, so it depends upon person to person. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो you can seek medical help. Thank you guys for watching this whole clip and I'm sure कि आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा. And for more such informative content, make sure to subscribe to our channel.